welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. This video is going to be a Nykaa haul as well as Bath and Body Works haul, Body Shop haul. So basically कुछ चीजें Bath and Body Works and Body Shop से मैंने offline जाके खरीदी हैं. But since these products are available on Nykaa, so I thought might as well include the products in the haul, like in the same haul. So yeah, I shopped a few things in the starting of December, if I'm not wrong. I think उनकी जब Pink Friday sale चल रही थी तब. एंड कुछ चीज़ें फिर मैंने बाद में शॉपिंग की थी. कुछ चीज़ें इस मंथ लाइक द बॉडी शॉप प्रोडक्ट्स आई शॉप्ड दिस मंथ. सो बेसिकली यू कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी अ कलेक्टिव ब्यूटी हॉल. एंड ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट विद द हॉल, लेट मी क्विकली मेक एन अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज. सो from this video onwards, I'm starting this new year contest just like I did my birthday month contest. वही same concept है इस new year contest का. तो आज से लेके next 12 videos तक I'm gonna host this new year contest जहाँ पे हर video में I'm gonna give one Nykaa voucher worth ₹250 to every winner. I know the voucher amount is थोड़ा कम, but since we would have like 12 winners, तो मैंने सोचा कि ठीक है, this voucher will kind of act as a coupon code for you to get some extra discount. So basically आप जब भी ऐसे नायका पे शॉपिंग करोगे आपको ₹250 लेस हो जाएगा आपके बिल में से. डिटेल्स एंड रूल्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, so make sure you stay till the end. And without any further ado, let's just get started with today's haul. Alright, so I have this Nykaa का box with me. Then I also have this Bath and Body Works का packet. We have Body Shop ka packet. So I'll just quickly start with the things that I got online from Nykaa.com. Now the first thing that I got is this Smashbox ka mini matte duo. This is the Sobhita collaboration. The MRP is ₹990. Sale के time पे भी इस पे कोई discount नहीं था, so I had to pay the full price for this. So basically I got this particular mini matte duo because I think this is versatile because you get a red lipstick as well as you get a nude color ki lipstick. This lipstick is like a very nice pinky nude kind of color. It's called Gulabe, and then we have this very beautiful red color which is called Boss. So high-end brand की दो lipsticks मिल रहे हैं in just ₹990, which I think is quite a steal. So yeah, that's the first thing that I got. The formulation and everything is quite nice, although it can be a little bit sticky, but अगर आप थोड़ा कम amount लगाओगे तो उतना ज़्यादा sticky feel नहीं होने वाला है. Then the next thing that I got is, again, I've been eyeing on this product since a long time and I finally got my hands on this one. So it is the K Beauty Illuminating Highlighter. This is what the outer packaging looks like. The shade is called Champagne Fizz. This is like such a beautiful highlighter. I love the shade, like it suits my skin tone very beautifully. The texture and everything is quite nice. ये आपके skin के texture को enhance नहीं करता है, which is a good thing. Now the third thing that I got is this Nykaa Rock Hard Nail Hardener. Basically my nails are quite weak, like इतना easily bend हो जाते हैं ना, I can't even tell you. So मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरे nails को hard बना दे and वो फिर bend ना हो. Now I'll be very honest with you guys, इसको लगाने के बाद मुझे like कुछ ज़्यादा difference I couldn't notice. This is more of like a transparent nail paint. I mean, I don't know like how to describe it, but ऐसा कुछ नहीं हो कि एकदम ऐसे हार्ड हो गए मेरे नेल्स एंड फिर टूटना बंद हो गए, बिकॉज मेरे नेल्स ना क्रैक होके टूट जाते हैं. लाइक गिव दिस वीडियो थम्स अप इफ यू कैन रिलेट. एक बार यूज करके मुझे पता चल गया था कि ठीक है, दिस इज an okayish product. Like I am not very impressed with this. Now the fourth product that I got from Nykaa is their Nykaa Nail Enamel in the shade 142. I don't remember the name. So it's this beautiful lavender color. Nykaa के nail paints बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं. Like इतना जल्दी ना सूखते नहीं है nail paints and chip भी नहीं होते हैं उतनी जल्दी. If you're someone who love pastel nail paints, definitely go for this one. The shade is called Lavender Crush. Next up I got a foundation and it is from Lakme. It is their 3D cover foundation with SPF 30. I love the coverage and the finish that it gives. ये oxidize भी नहीं होता है. Creamy है but थोड़ा thick है, however it blends beautifully. The only issue I have with this foundation, like I realized it एक दो बार यूज करने के बाद, so ये ना हमारे फेस का जो टेक्सचर है ना हल्का सा उसको enhance कर देता है. So if you have like a lot of texture on your face, I don't think you should go for this one. But if you don't have texture on your skin, so you can definitely check this out because it is a beautiful foundation. My shade is
what? Warm Natural 180. So it comes with a pump like this. Then the next thing that I got was, I don't know, मैंने ऐवे इसको order कर दिया था and I had no clue how to use this, and I was kind of skeptical also because this brand is quite famous for their makeup products, but this is the first time कि मैंने इस brand से कोई skincare product try किया है. So it is the Revolution Skincare Jake Jamie collection का face mask. It is the dragon fruit face mask. I used this for the very first time in one of my YouTube videos only. So this is what it looks like. It has those छोटे-छोटे dragon fruit वाले seeds. Basically, this is like a cream mask. आपको इसको अपने पूरे फेस पे लगाना होता है and then you have to let it sit on your face for 15-20 minutes. जो बचा कुचा रह जाता है ना, वो आपको फिर रिंस ऑफ करना होता है बाद में. वीडियो में तो I told you guys कि इस मास्क ने मेरे फेस को एकदम ऐसे इंटेंस हाइड्रेशन, बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन दे दिया है. उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर भी लगाया था, बट द नेक्स्ट टाइम मैंने अप्लाइड दिस फेस मास्क, मैंने कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया था उसके बाद, एंड within like what 15 minutes my face was back to normal. वो hydration वगैरह वो सब कुछ चला गया था. Although it is like a cream based mask which is supposed to hydrate your skin बहुत अच्छे से, but still you would have to apply a moisturizer after this. Like this is not enough on its own. If you ask me if you should invest in this face mask, I would say no. I mean 1500 रुपए का ये face mask है and कुछ टाइम तक ही असर रहता है, इसके बाद अब आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है. नेक्स्ट अप आई गॉट दीज टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. यू गाइज नो आई लव शुगर कॉस्मेटिक्स एज अ ब्रांड. फर्स्टली आई गॉट दिस ग्राफिक जैम 36 hour eyeliner in the shade 01 Black is Black. This is a beautiful liquid liner. I have talked about this one. Although it is waterproof, so it is a bit difficult to remove this one. You would have to, you know, remove this with an oil-based cleanser or a micellar water, of course. But then it is a beautiful product. The formulation is so good. It is jet black. It's intensely pigmented, you guys. इसकी wand इतनी ज़्यादा comfortable है. I don't know, like how to explain it properly. मुझे जब भी मैं इसको ऐसे लगाना स्टार्ट करती हूँ ना विंग लाइनर को, कब लग जाता है, इतना स्मूथली लगता है ना, मुझे पता ही नहीं चलता है. सो दिस इज लाइक अ ब्यूटिफुल लिक्विड लाइनर. इफ यू आर इनटू लिक्विड लाइनर्स, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम वेयरिंग अ वाटरप्रूफ फॉर्मूला, सो डेफिनेटली चेक आउट दिस वन. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम शुगर इज देयर टिप्सी लिप्स मॉइस्चराइजिंग बाम. दिस कम्स इन अ ब्यूटिफुल, लाइक अ वेरी फैंसी पैकेजिंग. I have used this one. This is what the actual packaging looks like of the Sugar lip balm. Now Sugar के makeup products मुझे बहुत पसंद है, no doubt. But I feel कि जो lip balm है ना, ये moisturizing नहीं है. And also this is in the variant Mojito 01 Mojito, and this has a very refreshing, like a minty fragrance. But ये लिप बाम्स का ना काम होता है कि आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करके रखे. हमें क्या फर्क पड़ता है पैकेजिंग कैसी हो, फ्रेग्रेंस कैसी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें बस ये चाहिए कि एक लिप बाम अच्छी, काफी हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग हो लिप्स पे. बट ये वो नहीं है. सो बेसिकली don't buy this, don't try this. Now I actually placed my order on the last day of Nykaa's Pink Friday sale, और उस दिन I remember कुछ तो 40% off था Bath and Body Works पे. So मैंने 2 lotions ले लिए थे. So the actual MRP is 1299, बट ये मुझे कुछ 700 समथिंग के दोनों ही लोशंस पड़े थे. सो बेसिकली आई हैव 6 प्रोडक्ट्स इन टोटल बाथ एंड बॉडी वर्क्स के, जिसमें से 2 मैंने नायका से मंगवाए थे ऑनलाइन, एंड देन 4 बाद में मैंने जाके स्टोर से लिए थे जब उनके स्टोर पे कोई सेल स्टार्ट हो गई थी. द फर्स्ट वन इज द विंटर कैंडी एप्पल बॉडी लोशन. इट्स लाइक अ 24 hour मॉइस्चर बॉडी लोशन. बाथ एंड बॉडी वर्क्स इज सो फेमस फॉर देयर फ्रेग्रेंसेज, देयर you know, candles and lotions and mists and everything. Like unki fragrances na, they take you to another world altogether. So this actually screams Christmas to me because it is such a beautiful scent. Like I can't even explain कि इतनी sweet, इतनी candy like fragrance है इसकी, which I love. Like this is so good. And इनके जो body lotions है, they're quite nourishing as well. Then the next lotion that I got is their Merry Cherry Cheer lotion. Again, it screams Christmas to me. Like
एक तो ना आई एम सो बैड एट डिस्क्राइबिंग फ्रेग्रेंसेज, सो प्लीज बेयर विथ मी फॉर दिस वीडियो, बिकॉज मैं जो भी ऐसे फ्रेग्रेंसेज लेती हूँ, चाहे मिस्ट हो चाहे लोशन हो, मुझे ना स्वीट फ्रेग्रेंसेज बहुत पसंद है. तो ये भी बहुत सुंदर से ऐसे स्वीट फ्रेग्रेंस है. एंड ये दोनों ही लोशंस जो है ना, ये इनके हॉलीडे कलेक्शन या फिर क्या कहते हैं उसे, क्रिसमस कलेक्शन वाले रेंज के हैं. नाउ जब उनकी स्टोर में कुछ ऐसे सेल चली थी, wherein you were getting flat 50% off on candles, on the 3-wick candles. So I was like, you know what, this is like the best time to grab this offer, because I was eyeing on Bath and Body Works ki candles since a long time. I picked up 3 candles in total. The first one is the cranberry peach candle. Oh my god, like this smells heavenly. Like क्या ही बोलूं मैं, it smells so much like cranberries and peaches, like the name is perfect and the fragrance is perfect. and इसको मैंने like 1-2 बार ऐसे burn करी भी हुई है क्रिसमस टाइम पे अपनी वीडियोस के बैकड्रॉप में रखने के लिए. सेकंड वन इज द विंटर कैंडी एप्पल. अगेन दिस इज देयर क्रिसमस कलेक्शन की कैंडल. एंड ये जो विंटर कैंडी एप्पल है, इसका बॉडी लोशन भी मैं पहले ट्राई कर चुकी थी, so I was so happy when I got my hands on this one. And again it has this very sweet and I don't know how to describe, बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस है इसकी. एंड इसको भी मैंने बहुत बर्न किया था क्रिसमस के टाइम पे. लाइक लिटरली वीडियोस तो चलो ठीक है अलग बात है, बट मैं घर में भी ऐसे ही क्रिसमस के टाइम पे ये बर्न करके बैठ जाती थी. एंड when I sniff it now, it reminds me of Christmas 2020. Like I have this thing with fragrances. मैं अपनी लाइफ के जिस टाइम फ्रेम में वो फ्रेग्रेंस, वो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस यूज करती हूँ ना, मुझे वो टाइम हमेशा याद रह जाता है अपनी लाइफ का. सो अगर मैं इसको 1 साल बाद भी स्निफ करूंगी ना, इट वुड स्टिल रिमाइंड मी ऑफ क्रिसमस 2020. थर्ड कैंडल जो मैंने अभी तक एक बार भी बर्न नहीं किया है, इट इज कॉल्ड नंबर 3 रिन्यू एंड रिफ्रेश. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. सो ये जो क्रैनबेरी पीछे इसकी तो ओवरऑल पैकेजिंग पिंक है, बट दिस हैज लाइक अ वेरी नाइस ओम्ब्रे सॉर्ट ऑफ अ पैकेजिंग. नाउ दिस इज अ वेरी नाइस रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस. इसकी फ्रेग्रेंस स्वीट नहीं है. एंड कैंडल्स में ऐसा होता है ना, मुझे हमेशा स्वीट फ्रेग्रेंस ही पसंद आती है. मुझे और कोई ऐसी ओवरपावरिंग फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है. लाइक बाथ एंड बॉडी वर्क्स की कितनी कैंडल्स थी जो मुझे बिल्कुल ऐसे ब्लै लग रही थी. लाइक स्टोर में स्निफ करने के बाद भी ना सर पे चढ़ रही थी उसकी फ्रेग्रेंस. सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट फ्रेग्रेंसेस. तो ये वाली सच अ नाइस कामिंग एंड सूदिंग सी रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस, ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकती हूँ. भाई काम चला लो. आई एम लाइक क्वाइट सैटिस्फाइड विद माई बाथ एंड बॉडी वर्क्स कैंडल शॉपिंग. द लोशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दिस वन, व्हिच इज कॉल्ड रास्पबेरी शुगर. अगेन आई बिलीव कि ये भी इनके क्रिसमस कलेक्शन का ही बॉडी लोशन है. It smells again so good. इसकी भी स्वीट सी फ्रेग्रेंस है यार. लाइक कैसे डिस्क्राइब करूं, आई डोंट नो. सो बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना प्रोवाइड द लिंक्स ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स, द नायका लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नायका पे क्या होता है ना, यू कैन एक्चुअली रीड अबाउट द फ्रेग्रेंस. लाइक एक प्रॉपर ना फ्रेग्रेंस डिस्क्रिप्शन दिया होता है नायका ऐप पे अबाउट द बाथ एंड बॉडी वर्क्स की फ्रेग्रेंसेस. सो आप वहां पे जाके एक बार पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसी फ्रेग्रेंस है. ये भी स्वीट ही है, बट ये कम स्वीट है. लाइक विंटर कैंडी एप्पल तो इट्स एक्सट्रीमली स्वीट, ये उससे कम स्वीट है. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू बॉडी शॉप. मैंने बॉडी शॉप से बहुत टाइम बाद शॉपिंग की है. लाइक आई डोंट नो, 2-3 साल बाद मैंने बॉडी शॉप से शॉपिंग की है. एंड आई रिमेंबर बैक इन 2016-17 आई यूज्ड टू यूज देयर जिंजर एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऑल द टाइम. एंड यू नो व्हाट, इट वॉज लाइक अ सेवियर. ठीक है, स्पेशली इन विंटर्स मेरी डैंड्रफ उससे बिल्कुल चली जाती थी. तो मैं मेनली वहां पे उनका जिंजर एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड बनाना कंडीशनर लेने ही गई थी. मैंने सोचा आई शुड बेटर स्विच बैक टू माई ट्रस्टी ओल्ड शैम्पू एंड कंडीशनर. सो या, आई गॉट द जिंजर एंटी डैंड्रफ शैम्पू. इफ यू हैव डैंड्रफ, जस्ट ट्राई दिस वंस एंड लेट मी नो हाउ दिस वर्क्स फॉर यू, बिकॉज दिस वर्क्स ब्यूटिफुली फॉर माई हेयर. नाउ इसी के साथ के लिए ना मुझे कंडीशनर ऐसा चाहिए होता है जो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग हो, नरिशिंग हो हेयर के लिए, एंड विच इज स्पेशली मेंट फॉर ड्राई फ्रिजी हेयर. सो एब्सोल्युटली स्वेयर बाय दिस बनाना कंडीशनर. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कंडीशनर. इट इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई हेयर. सो मुझे ये कॉम्बो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट हुआ करता था. नाउ देयर वाज अ रैंडम ऑफर गोइंग ऑन इन द बॉडी शॉप स्टोर के अगर आई थिंक कुछ 3000 रुपीज बिल बनेगा, so you would get 25% off on your order, which I think was an amazing offer. What I did was I actually picked up one more ginger shampoo. So I have 2 of these. बिल को कुछ 3000 करने के लिए, because obviously 25% off मिलने वाला था. So मैंने 2 और products लिए थे. I got one tea tree facial wash for Abhishek because he has like
ऑयली स्किन, ब्लेमिशेस हैं उसके फेस पे, एंड दैट इज लाइक अ बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ऑन नायका. एंड ऑल्सो मैंने नायका पे रिव्यूज भी पढ़े थे दैट फेस वॉश एक्चुअली हेल्प्स you to get rid of your blemishes. So I'm really like, I do have high hopes from that face wash कि वो उसकी skin पे अच्छे से काम करे. It's been like 3-4 days कि उसने वो use करना start किया है. Now just to cross 3000, I picked up this shower gel. This is their British Rose variant. It is like a best seller on Nykaa and I have used this in the past. This smells divine and ये कोई भी ना residue नहीं छोड़ जाता है आपके body पे. इसका actually मैंने body butter भी use किया हुआ है. I love British Rose range. So yeah, मेरा कुछ बिल 3000 से ज्यादा बन रहा था, but after getting 25% off, the bill came down to 2344 rupees, which I think is quite a steal. Now जाते जाते ना ऐसे नजर पड़ गई थी flat 50% off वाले products पे. So basically if you buy 2 products, you will get flat 50% off. तो मेरा फिर मन ललचा गया था वो ऑफर देख के. So I actually picked up 2 more shower gels. एक shower gel is for 595 rupees, but then it was flat 50% off. So 2 shower gels मुझे 595 rupees के पड़े थे. And since it's their holiday collection, Christmas collection वाला shower gel, तो मैंने सोचा यार ठीक है, like I should try this. So it is their festive berry shower gel. This is what it looks like, and we got the same variants. दोनों ही shower gels इसी variant के थे, festive berry. So एक I kept and the other one he kept. So yeah, that was the last thing of this haul, and with that I am pretty much done with this haul. And now let's talk about the New Year contest जो इस वीडियो से start हो रहा है. So basically आज से लेके next 12 videos तक हर वीडियो में एक कॉन्टेस्ट होगा. एंड 12 के 12 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सारे ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. रूल्स कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं. हर वीडियो में मैं 3 बेसिक रूल्स ही आपको बताने वाली हूँ. सो रूल नंबर 1 इज दैट यू वुड हैव टू बी अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल. सेकंड रूल इज यू वुड हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई वुड लीव माई इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड द थर्ड रूल वुड बी दैट यू वुड हैव टू आंसर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. एंड आज के कॉन्टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है कि आपको इस हॉल में से सबसे अच्छा क्या लगा एंड इज दिस समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई. यू जस्ट हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड यू आर डन. अब 2 दिन के बाद मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विनर का नेम अनाउंस कर दूंगी. सो मेक श्योर यू कम बैक आफ्टर 2 days एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो फॉर द विनर्स नेम. आई एम श्योर कि हम लोग नायका से शॉपिंग करते ही रहते हैं. लाइक वंस इन अ वाइल तो हर कोई कर ही लेता है नायका से शॉपिंग. सो इफ यू हैपन टू विन दिस वाउचर, you can simply use that voucher to get like a 250 rupees off on your order. You know, it's like very simple. So yeah, that's pretty much it for this video. If you liked it, then please make sure you give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. If you would like to connect with me on my social medias, I would surely leave all the links for you in the description box below. And yes, I shall see you next time. Till then, you all please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. Bye bye.